औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अस्सलामु अलैकुम. Once again I'm here with a new topic and which is very much important as well and interesting as well. So today in this class we are going to talk about what is a syllable, okay, and we will also learn about monosyllabic word, disyllabic word, and then we will try our polysyllabic words के बारे में हम धीरे धीरे सीखेंगे. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं syllable का. तो syllable के डिफिनीशन में अगर आप देखें, यहाँ देखिएगा प्लीज़, एक्टिव हो जाए. syllable के डिफिनीशन में अगर आप देखें, so a unit of pronunciation mean like whatever we pronounce having one vowel sound. So first of all you should know what is vowel or vowel sound, okay. So it's quite easy. If someone asks you in alphabets how many vowels are there, so we always say like they are, how many vowels are there, like 5 vowels are there. They are A, E, I, O, U, okay. They are vowel letters. Remember one thing, they are not vowel sounds. They are what? They are vowel letters. They are vowel letters or vowel letters. ठीक है बेटा? Yes. अच्छा, now if someone asks you what about vowel sounds, so you may simply say there are 20 vowel sounds. How many vowel sounds are there? 20 vowel sound. Inshallah, if God will, so we will have a separate video on vowel sounds only, okay. But simply I would like to just give you one simple clue. How will you recognize that whether this is a vowel sound or not? Okay, if it sounds like A, E and O, so we may simply call it that this is a vowel sound. Simply ज़हन में रखे, A, E, U मेनली हमारे पास क्या है, ये 20 के 20 वाल साउंड्स है. A, E, U एक लेटर के अंदर आपने देखना होता है कि ये कितने दफ़ा दोहराया गया, कितने दफ़ा, उतनी दफ़ा मतलब उसमें क्या होगा, इतनी दफ़ा इसमें वो syllable होगा. ठीक है ना. तो डिफिनीशन में आपको समझ आ गया कि हैविंग वन वाल साउंड मीन लाइक फ्रॉम दिस 20 साउंड्स वन साउंड शुड बी देयर and one or more consonant sounds. So I think you know what are consonant sounds. So consonant sounds are 24 in number, consonant sound, and we will have a separate video as well on like how vowel sounds are there, okay. Consonants, how many 24 sounds are there and how they are pronounced, okay. So simply mean what are consonant sounds are like which are not in this group A, E, I, O, U. जो कि इस ग्रुप का हिस्सा ना हो तो वो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड होंगे. सिर्फ इतना जानिएगा, ठीक है. तो अब सिलेबल के डिफिनेशन में आपको क्या चीज़ समझ आ गया कि जिसमें हमारे पास वन वाल साउंड हो इन एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट साउंड हो तो इससे बन जाएगा वन सिलेबल. फिर व्हाट इज सिलेबल? एक प्रोनाउंसिएशन का एक यूनिट, एक हिस्सा जिसमें वन वाल साउंड हो एंड वन आर मोर कॉन्सोनेंट साउंड हो, दैट इज नोन एज व्हाट? सिलेबल. अब यहाँ मैं एक वर्ड लिखा हूँ आपके सामने बेटा, ब्यूटीफुल. चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करें. तो ये भी हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड हो गया. अब ई ए यू, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको एक साउंड देता है, ब्यू यू, यानी ये वाला ई ओ साउंड आपको देता है. तो यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास वन सिलेबल हो गया. अब ट हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है, जबकि आई जो है अ, ये हमारे पास क्या है, वाल साउंड है, तो दूसरा हो गया. और एफ यू एल, तो एफ हमारे पास कॉन्सोनेंट है और एल भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, जबकि यू जो है अ, ये हमारे पास क्या है, वॉल है. तो इसके अंदर हमारे पास कितने सिलेबल आ गए, 1 2 3. तो ये हमारे पास एक वर्ड के अंदर कितने सिलेबल हैं, ब्यूटीफुल वर्ड के अंदर कितने सिलेबल है, 3. अब आसान तरीका क्या है इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि आपको किस तरह पता चलेगा? सबसे पहले गिन लो कि इसमें कितने वाल लेटर्स है, वाल लेटर्स. तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें कितने वाल लेटर्स है. 1 2 3 4 and 5. लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये 1 2 1 और 2 और 3 जो है, ये 3 लेटर जो है
ये एक दूसरे के बाद आए हैं, मतलब कंटिन्यूअस आए हैं, तो इसको कंसिडर किया जाता है वन सिलेबल। अब यहाँ पर ई जो है अकेला आया है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। सुने, जितने लेटर्स है वाल, इतने इसके अंदर सिलेबल होंगे, लेकिन शर्त यही होगा अगर एक दूसरे के बाद एक से ज़्यादा वावल आए हो, इवन देन दैट इज कंसिडर्ड एज वन सिंगल लेटर और वन सिंगल लाइक वन सिंगल साउंड, अप वाल साउंड। ओके, इसको वन सिंगल साउंड का। तो ये बी ई ए 3 है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बाद आए हैं, सो दैट इज लाइक वी इट इज कंसिडर्ड एज वन सिंगल। ओके, एंड सेम इज द केस हियर। ओके, सो देयर 3। नाउ आपको मेरे ख्याल में सिलेबल का समझ आ गया कि व्हाट इज सिलेबल। नाउ व्हाट इज मोनोसिलेबिक वर्ड? तो मोनो सिंपली मीन्स लाइक वन, लाइक दिस इज अ साइंटिफिक वर्ड्स, मोनो, डाई। ओके, सो मोनो मीन्स लाइक वन, syllabic mean having one syllable, or word mean, so the word having or the word that has one single syllable is known as what? Monosyllabic word. So look at here, fast हमारे पास एक एग्जाम्पल है fast। तो अब देखिए इसमें कितने वाल हैं? वन वाल है, so सिंपली बस यह वन सिलेबल है। अब यहां देखिएगा टाल, तो कितने सिलेबल है? वन वाल है, so it means this is one syllable। मेरे ख्याल में आपको समझ आ रहे। डन। नाउ ये हमारे पास हो गया मोनोसिलेबिक वर्ड। नाउ व्हाट इज डाइसिलेबिक वर्ड? सो सिंपली मीन डाई मीन टू, एंड सिलेबिक मीन लाइक टू सिलेबल, and word mean word. So the word having two syllables. Okay, the word that has two syllable is labeled as what? Disyllabic words. Like if you take the example of this word hotel, तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। ओके, सो ये एक वाल लेटर है, ये दूसरा वाल लेटर है, इसके साथ ये कॉन्सोनेंट है और इसके साथ ये दो कॉन्सोनेंट है। डेफिनेशन में पढ़ा हमने कि एक अगर एक से ज़्यादा हो कोई बात नहीं, तो ये एक हमारे पास सिलेबल हुआ, ये दूसरा हमारे पास क्या हुआ? सिलेबल। होटल। समझाते या नहीं? उबैद आते समझ? हाँ, यू हैव अ क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। असल में होना चाहिए कि ये वन सिलेबल हो, लेकिन हम नॉर्मली इसको प्रोनाउंस करते पोएम। एक्चुअली दिस इज पोम। व्हाट? पोम। सो इट शुड बी इंक्लूडेड इन दिस वेरी कैटेगरी, वन सिलेबिक वर्ड्स। बट एज पर प्रोनाउंसिएशन, इफ यू आर कंसर्न्ड, प्रोनाउंसिएशन में अगर हम बोले सो पो एंड देन इम, so po o and then im, so it means two vowel sounds are repeated over here, so it means there are two, po and im, poem. But actually the real pronunciation is what? Poem. Figure can nasi. Okay, what is the actual pronunciation of poem? Poem. Like all the time we pronounce some words like we may pronounce mispronounce. They are like they are pronounced miss. Like for example, if you take the example of kilometer, so that is kilometer, and if I say like 30 kilometer is the distance from here to Nowshera, so what do you mean to say? I mean say 30 kilometer is the distance from here to Nowshera. Like there are so many other words, like if you pronounce it, so it becomes like it seems an awkward, but even then they are correct. But unfortunately we have learned or understood those very words incorrectly, so even then their label is incorrect, but even then they are correct. So it should be included in this very group. Or if you include in here this word in this very group, disyllabic words, so it means there are two syllable, and you can include this as well. Now look at the third example, forget. So okay, one syllable, one sound हो गया वाल, and another sound हो गया forget. तो ये हमारे पास क्या है? डायसिलेबिक वर्ड्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अब बाज़ लोग कहते हैं कि डायसिलेबिक को भी हम पॉलीसिलेबिक वर्ड भी कह सकते हैं। लाइक पॉली मीन मोर देन वन,
सो जब मोर देन वन हो गया तो इसका मतलब इसको भी हम ये ट्राई सिलेबिक वर्ड में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, मोर देन. सो पॉलीसिलेबिक वर्ड is either included in this very group or and also in this very group. आपको अब दोनों में कोई आपसे पूछे डाइसिलेबिक वर्ड को हम पॉलीसिलेबिक वर्ड बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं. Poly mean like more than one. Okay, and like if you talk about die, so die it also means more than one. Now what about trisyllabic words? So tri simply means like three. Tri mean like three, and syllabic means syllable, and words mean like the word having three syllable. You're not getting me, I think so. Do you get me, buddy? Yes. Achha. So the word consists of three syllables. Like if you take the example of this very word, beautiful, as I already give you this example over here. So this is one syllable, this is another, and this is okay. So three syllables mein ho gaya. So that is known as what? Like three syllabic words या trisyllabic word. Metaphor तो meta and for. तो अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है, यहाँ पर अ है तो इसको मैं एक अलग एक सिलेबल लूँ. नो, याद रखिएगा जब अ साउंड जो है ई, तो ये एंड में जब आ जाए तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट सिलेबल. फिर सुने, नोट को पास लेके, जब ई जो लेटर है, वाल लेटर जो है, जब ये वर्ड के आखिर में आ जाए, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट सिलेबल. इट इज़ कंसिडर्ड एज फोनीम. व्हाट? लाइक दिस ई इज कंसिडर्ड एज व्हाट? एज अ फोनीम. वेयर इज द फोनीम? दिस फोनीम. फोनीम मीन लाइक one single sound. Do you understand me this or not? Okay, so metaphor, they are the example of this. So trisyllabic word is also known as polysyllabic words. I hope you have got the idea of syllable, monosyllabic word, disyllabic word, and tri or polysyllabic words. Even then, if you have any questions, you can direct ask me. And those who are watching my videos, and if you find my video fruitful, so kindly share it with your friends, and also like, and also tell me in your comment box how did you find my video. Moreover, if you have any questions, never feel hesitant to ask me, and you should ask me directly in the comment box. I will definitely entertain your question and comments. Thank you so very much. Assalamu alaikum.